just a single content. So एक single content में से for example और past tense में देखें तो questions पास हैं लेकिन अगर इस साल इसमें 20 का 50 मार्क्स के questions देनी है तो main भी probability है कि वो इसको switch करें सिर्फ चांस का आप किसी और content से जाए but still अगर इससे switch भी करते हैं तो options would be there if the example the past so normally two long questions first to content but still students जो उसको लगता है कि मुश्किल है lengthy है and then they switch and then they move forward towards US history या gender studies या बाकी जहाँ तैयारी के लिए कम टाइम चाहिए होता है but these are the two major areas where you have to like prioritize इसको करना है ये दो areas रखते हैं because two long questions तो यहाँ से वहाँ से करने ही दो है वाले बात है for example long questions and then the data also the 40 to 40 multi में से कभी आ जाता है कभी 20 questions से आ जाता है जब अपने डेली यूनिफिकेशन लाइक भी करते थे तो मैं merge भी कर देते and then the origins of word one so we are going to cover all these contents and what I recommend is basically the 7 contents and all for 6.5 contents I will cover Italian unification के entire content will be standardized cover and I will write the notes that you can manage so out of 7 contents in 6 lectures I'm going to manage 6.5 5% मैं कहूँगा कि आप 0.5 आप लोग मैनेज करें and that you can do और अगर वो आप 5 जो रह गए डायनामिक्स की कर देते हैं तो साथ के साथ कंटेंट्स आपके तैयार हैं उसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे होंगे सब भी आपको फिर आते होंगे and then you are going to pick and choose में आप फिर उसको पिक करेंगे जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि 70-80 मार्क्स आए अगर 8-10 नंबर लेने हैं तो फिर सब्जेक्ट स्विच करेंगे 8-10 वाले के साथ इतनी स्ट्रगल नहीं then spot another discipline में कम टाइम लगे अगर यूरोपियन रेटिंग है तो you are going to target high scores ये तो essential है अगर आपने 8-9 नंबर भी लेने हैं तो फिर उस सब्जेक्ट पे जाएं जहां वो आप मैनेज कर लें कम टाइम में because it's going to take time ये टाइम लेगा थोड़ा सा ये मुश्किल में डालेगा but then scoring trends बहुत पॉजिटिव है स्टेबल सब्जेक्ट है एक होते जो टारगेट अक्सर डिसिप्लिन टारगेट हो जाते हैं इट्स अ स्टेबल सब्जेक्ट यानी टारगेट भी हो तो आप ऐसा नहीं होगा तो फेल हो जाए अगेन दैट यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्टेबिलिटी है एंड हाई स्कोरिंग मार्क्स का ट्रेंड and you can mark you can score in 90s 80s में तो easy नहीं आते last I have been teaching here since last 3-4 years since then like students have managed to score 87 last year highest score by Europeans in the school is 70 81 82 83 scores high and अच्छे candidates but language skills के साथ अगर आप effort करेंगे then you can score in 80 फिर language skills essential हो जाते हैं but 80 इसमें easy नहीं आते अगर आप अच्छा लिख लेते हैं अच्छे से grammatical errors बस आ गए बहुत अच्छा तो obviously मुश्किल है but still if you grammatical errors नहीं हैं then you can easily score 80 बाकियों में लेना is very difficult तो एक तो ये कि stability बहुत मुश्किल है score नहीं आ रहा even then you would be scoring in 60s score in terms of stability, in terms of the score, higher scoring scores, individual brilliance है आप previous years के record ने data उठा ले तो European history high scoring in civil subject है but ये एक effort इसमें थोड़ी सी ज़्यादा required है so the pattern has to reach करने का या I highly recommend के साथ content आने चाहिए and then you are going to pick and choose for example इस साल question है ट्रिटी ऑफ याना 2 घंटे लगा के मैंने सिर्फ ट्रिटी बनाई सारे नोट्स दिए स्टूडेंट्स से कुछ भी पूछे सब कुछ आएगा लेकिन जब क्वेश्चन आएगा मुझे समझ आ रही थी स्टूडेंट्स को समझ आ रही है ये क्या इस तरह की एक दो कोड्स को ले लेता है क्या कांग्रेस ऑफ याना इट वाज इट डजंट वर्क इट एंड देन मेरी आपने ट्रिटी पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है जो कुछ पढ़ा है उसको पुट नहीं कर डालेगा किसके करेंगे इस चीज को कम करने के लिए लाइक आपके पास ऑप्शन अगर एक ऐसी स्टेटमेंट है आपका कंटेंट तैयार है नहीं बिल्कुल समझ आ रहा है क्वेश्चन की यू कैन शट तो 4 राउंड क्वेश्चंस आपको एलिमेंट में आने चाहिए हां इसके ऊपर जो है आपके वेरी क्वेश्चन नंबर स्कोर्स कैन वेरी लाइक यू कैन स्कोर 13 का कोई होगा कोई 15 16 का so you have to like
cover all contents. So जैसे ये contents cover हैं तो obviously objective भी उसके साथ manage हो जाएगा. So that is the part one, and hopefully in 6 like normally it takes 6 to 6.5 lectures, but that I manage. So I have been teaching these last couple of years. So I managed to access to करना है एक आधा lecture आगे कुछ हो भी गया. And then second part is post-World War audit. First World War के बाद what happened in Europe and what were the rules of the game that were defined in institutions. Where they were discussing 8 content. And then second part. Dictatorships in Europe, rightist dictators and leftist dictatorships in Europe. Right, left wing क्या difference है, fascism, Nazism stands for what, Marxism, socialism stands for what, Leninism, Marxism क्या difference है. I discuss all these concepts. It's my responsibility. I'll make sure that the idea is clear. So we discuss that dictatorships in 8th lecture में था कि जो है talking about the rightist dictators, and 9th lecture के अंदर talking about the left, the Marxist ideas and the Bolshevik revolution in Russia. So I need to talk about that as well. And we covering these sub-contents as well. Yeah, we covering these 7 and 8 lecture. Sub-contents भी होंगे, ऐसे नहीं कि मेरे content ठीक है ना, नीचे जितने points हैं the same those points as well. The next is Second World War. In 10th lecture, I'm going to talk about Second World War, the road towards war, the causing and the events and what happened during the wartime period will cover. And then eventually, post-war during the wartime negotiations, attacking Charter in Iran and Potsdam conferences, etc. So we're going to talk about that. So the rule making and the institution automating that was there during the war. We'll discuss that in these things. And then eventually, in 11th lecture, which will do the last one, and I'll discuss the Cold War, the origins of the Cold War, how Soviet Empire expanded towards the Eastern Europe, the rivalries and the so I will cover the 12th content as well. So NPT वगैरह नहीं करवाऊंगा, the nuclear issues में hopefully आपने भी कर ली होगी, but the rest I'll cover. Well, last content I'll skip because 11 lectures हैं मेरे 13 contents. और अगर हम first 2 contents की बात करें, it almost takes 2 to 2.5 lectures. In first 2 contents 3 to 3.5 lectures ले जाते हैं. और अगर मैं इसको 2 में भी करना चाहूँ, then I'll be rushing at a very quick pace. होगा क्या? जो कुछ next concepts हैं, कुछ भी building होगा, then जो है वो उसका कोई फायदा नहीं. So I'll be building a base, थोड़ी सी slow pace के ऊपर, then I'll pick up the pace. वैसा नहीं होगा कि हम rush करेंगे. Initially I'll be pretty slow. I'll clear these concepts and then eventually I'll be picking the pace. जब वो base बन जाएगी, then I'll be picking the pace. अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया, 11th lecture तक जितना मैंने पढ़ा दिया, then you can manage. ये जो है you can manage somehow. ये फिर easy भी हो जाएगा. इतना याद होंगे कि कुछ फिर आप खुद भी manage कर सकते हैं. And then the recommended book, which is like textbook sources, and I'm going to discuss the content stage in the second part का भी देख लेते हैं. The second part के अंदर is like 4 long questions आएंगे, एक जो इसके अंदर वो short note बन जाता है. Rather than 4, अब यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है थोड़ा सा चेंज करते हैं. 4 छोटे लॉन्ग क्वेश्चंस 3 हैं. 3 में 2 लॉन्ग होंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे. 5 छह भी हो सकते हैं, 10 के भी. बट चॉइस होती है. 7 हैं तो 4 करने होंगे. चॉइस होती है. So we'll be covering the short notes as well. जब पहले कंटेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें शॉर्ट नोट्स भी हो जाएंगे. और अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो नॉर्मली 2016 या even before that last 20 years, 9th content में से एक बस क्वेश्चन आ रहा है. इस साल भी है, पिछले साल नहीं था, उससे नेक्स्ट वाले में था. बाकी 2016 आज सिर्फ एक साल इस 9th content में से लॉन्ग क्वेश्चन या बाकी हर साल. So you can simply point out कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है. For example, यहाँ से 9th से नहीं देगा तो 8th में switch कर देगा. And then second World War में से एक क्वेश्चन आ रहा है. Sometimes इस साल उससे 13th में से वो चला गया. And then the short notes will be there from these contents as well. तो manage हो जाता है. Score अच्छा रहता है. 70s is like average score is एक candidate अगर written qualify कर गया तो उसका average score would be 70. वो अच्छा perform करेगा तो would be 70s. Like 90 almost like almost 90. ये फायदा है ये तो इसमें. Recommended book, yeah. The first one is recommended one. It's not included by Peacock. FPSC ने भी उसको recommend किया है. I recommend the same book. It would be like a text and you have to buy that. Buy ये एक पंजाब textbook की तरह भी यूजिंग करके पटेल को textbook की तरह. So that is the
मेजर रिकमेंडेड बुक, ये तो आपने बाय करनी है, ये आपने एलकेजी पढ़ लेना है, एंड द रेस्ट ऑफ द डाटा आई ये कंपल्सरी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक बुक पढ़नी है, we'll be using multiple books and then the various chapters from those books, and I'll be providing those books and those chapters. I'll be recommending कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी है, उसको कौन सा चैप्टर करना है, कहाँ से क्या करना है. So we'll be using multiple books, and then so एक तो standard book is the Peacock's version, तो ये आप buy कर कुछ और जैसे कि using book Christopher Books की book Encyclopedia of Europe, उसके कुछ couple of chapters पढ़ेंगे, then Messenger's book Diplomacy, they're going to study a few chapters, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगा, background जिनका है they are going to read Messenger, बाकी नहीं करेंगे, वो पहले अपनी base बेहतर करेंगे, then they can read Messenger's Diplomacy, and then E.H. Carr की book International Relations Between Two World Wars, themes like reality from Wells to Power, American Century, so multiple books हैं, उसके कुछ chapters and I'll specify. Now my की book है Mastering Modern World, so I'll be sharing those books. So after में हम we're going to formulate a group WhatsApp. तो class से पहले ही I'll share the data. Recommended book की हमने buy करनी है, rest of the books I'll provide. So after books हो ये books को go through करना होगा different chapters को पूरी book obviously नहीं करेंगे. कुछ books पे एक दो chapters आपने पढ़ने. And then I'll share the documentaries related to these contents. Those would be the essential ones. And then I'll provide some short notes as well, which is like in the form of a notes, slides मैंने PowerPoint बनाई है, वो short notes हैं, तो वो भी I'll share. यानी आज तो बस थी next class before we leave here, so I'll share this slides in advance. आप उनको go through करके ताकि फिर यहाँ पे जो है better analysis को करें. The short notes जो हैं एक तरह के, you can utilize those notes. नए से notes बनाएंगे, it would take time, particularly the ones who are going to be here after a couple of months. So that would be very difficult task. So what I recommend normally, जो short notes मैंने बनाए हैं, आप उसी को use करें according to your own context. जहाँ आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं था, तो जो आप उसको अच्छा करें. So you are going to refine those notes. अपने अंदाज से उनको जो है वो refine करें. So points add करें, कहीं आपको लगता है point ठीक नहीं है, उसको cut कर दें, but use those notes. I scored 90 while उसके उन्हीं notes होंगे, उससे ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बुरे थे ज़्यादा नहीं चाहिए. अब उसको मैं बहुत बेहतर करेंगे, उससे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे. They are like वो ढेर सारी books consult करके बनी हैं, multiple sources से बनी हैं, so you can use those notes. और उसमें ये है कि आप उसको improvise करें और अपने उसको extend करें points को और उसको improve करें. So short notes like उसी के प्रिंट आउट लें, उसी के अंदर ही पॉइंट्स ऐड करते जाएं, आपके नोट्स से आप बिकॉज़ लाइक इतना टाइम तो रहने नहीं गया, तो उन्हीं को ही आप यूज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड देन क्रैक दोस नोट्स. नॉर्मली उन्हीं नोट्स में से लास्ट कपल ऑफ इयर्स एग्जाम में सारे क्वेश्चंस नोट्स में बुक्स तो बात की बात है. सबसे पहले तो यार जो मेजर याद करने की चीजें वो नोट्स है, वो आप याद करें पेपर वहीं से हो जाएगा, लेकिन स्टिल भी नहीं उसकी बैकग्राउंड के लिए आपको कुछ टेक्स्ट तो करना पड़ेगा. द पीकॉक्स वर्जन ये बुक है, इसको पढ़ने नोट्स डॉक्यूमेंट्रीज के साथ ये बुक पढ़ने, इससे आगे ऐड करना है. सो आई एम शेयरिंग मल्टीपल बुक्स, तो आप उनके कुछ चैप्टर्स सिर्फ गो थ्रू करना है, उसको लेके सारा दिन एक चैप्टर तो नहीं पढ़ना, पर 10-12 पेज ही ना एक घंटे बुक में पढ़ डिसाइड करना. जिसको रिटेन करनी है जो इन्फॉर्मेशन वो नोट्स के अंदर, बाकी उसको कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आपने रश थ्रू करना है बाकी चैप्टर्स. And then I'll be sharing a few articles from foreign affairs as well, particularly I'll highlight it, and I'll be sharing, and then I'll bring point the articles कि आपने कौन से go through करें. So that was about the data. So hard copy, recommended work, short notes, and documentaries. So I'll be providing the data. And the content क्या है, the profession क्या है, ये देख लिया. In terms of the score, it's a high scoring and stable subject, but still I do acknowledge that. I do comment that के मुश्किल है थोड़ा सा, and then lengthy भी है. So then the answer, how we can manage that, and the answer is that if you can use those notes, then they can facilitate you, and the rest I will like they help you. जितने contents से ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी. I am here to facilitate you, or I will try to make these concepts as easy as I can.
But still, it's a two-way learning, it's a two-way process. You have to like put your effort as well. That was about the content, paper pattern, kya hai, books, data. So that was brief issues that normally I address. So if you have any questions, you can ask. Otherwise, I can go forward. Yeah. So I'll be sharing the after class. I'll share that. First content is your way. Normally, sometimes pace थोड़ी ज़्यादा होती है मेरी अभी पढ़ाने लगा हूँ तो आई पी बिट्स को beginning में but gradually synchronization हो जाएगी then I will be making the pace. But still, कहीं issue है you have to ask the questions. So before I move towards the first content, yeah, any general questions, any queries if you have, you can ask me next so that you can move forward. जिस ग्रुप आज ही बनेगा और ऐड कर जब आज ही आई भी शेयर डाटा आज के कंटेंट ही है नेक्स्ट का जो होगा वो भी मैं आज दे दूंगा कल वाली बात नहीं आज नहीं क्लास पहले से ग्रुप तो मैं नहीं बना इन माय केस एक जब मैं नहीं कुछ भी मान में एक और जो पॉइंट में इंश्योर करूंगा मेक श्योर कि मिड दिसंबर से ऑनवर्ड्स हो जाएगा पहले वाली टॉपिक दिसंबर में क्योंकि मेजर कंसर्न ये है कि फैब में एग्जाम में क्लियर कैसे खराब हो Well, I'll talk to them. Next class I can discuss the word technology. Maybe वो agree कर जाए, maybe mid-December तक, but इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. So, ग्रुप आज बनेगा आज ही मैं डेटा शेयर करूँगा. Next class भी आज बन जाए. ताकि आप पहले ही पूछ चुका है क्या आप insights. ठीक है जी. Yeah, anyone else? Any queries? Any questions? And KPMS या बलूचिस्तान KPMS ये कर लें वो का करो चाहिए. जरूरत ही नहीं है कुछ और ये गारंटी पेपर इजी है करना उसमें भी है मेरे ख्याल में उसमें भी सारा हो जाएगा है कुछ रह नहीं जाता जितना मैंने पढ़ा रहे हैं तो मेजर कंटेंट्स वी कवर ऑल द ऑल कंटेंट्स सो क्योंकि मेजॉरिटी इज फ्रॉम कैपिटल बलूचिस्तान से गाइस लास्ट कुछ ईयर से भी ट्रेंड है यहाँ पे क्योंकि देखो पे हम कहीं कैपिटल में आई थिंक 200 के बलूचिस्तान में 150 के तो वो फिर वहाँ पे मेजॉरिटी कैंडिडेट्स वहाँ से आ रहे हैं पंजाब से है ही नहीं पंजाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो शुदा है यूनिवर्सिटी एज फार एज इट्स ग्रेजुएशन ठीक है जी या ये जी नोट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन 80 स्लाइड्स है शॉर्ट नोट्स 80 स्लाइड्स तो शॉर्ट नोट्स 80 स्लाइड्स इसलिए मैंने कहा कि पेपर ही नहीं मिस याद रहेगा ये शॉर्ट नोट्स ये कंटेंट और इसकी स्लाइड्स जो उसमें तो कुछ रह गया कौन से शॉर्ट नोट्स कौन से होते हैं तो बाकी भी इसी तरह है मैंने कोशिश की है कि व्हाट आई ट्राइड कि आप पेपर पे बैठे तो वहां बैठ के ऐसा ना हो कि ये नहीं पढ़ाया फिर वो एकेडमी और जो टीचर होते हैं उसको गाली नहीं होती ये इस तरह नहीं पढ़ाया उस चीज को मैंने छोड़ के ऐसा ना हो दुआएं जो है ना वो होनी चाहिए कि हाँ ये सारी याद है आप एफर्ट ऑब्वियसली आप भी थोड़ी सी करेंगे साथ के लिए कि उस चीज को मैंने कोशिश किया कि पेपर में बैठे हुए प्लान नहीं हो जाए कि ये इवन जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो एटलीस्ट दो क्वेश्चंस तो आपके हो जाने चाहिए वो साइंस में से प्रीवियस ईयर्स में साइंस में से दो क्वेश्चंस आ और उसको फिर मैं ग्रेजुअली इंप्रूव कर So moving towards first content, and I'll be sharing these slides. इसको ऐसा नहीं है कि आप लिखने बैठ जाएं और कुछ points के बोल दें. I'll share these notes. कुछ points आप you can write. लेकिन अगर नहीं लिखे जा रहा तो ये slides आपके पास होंगे. तो परेशान नहीं होना उसकी slides. So we need to understand that it's first content is a French Revolution. Any questions if there is no? So moving towards the content, the first one is the French Revolution. We need to understand. In 1789, the revolution occurred in France. But we need to understand what was happening in Europe. Europe का map तो पता होना है वो क्या रहा है कहाँ पे क्या आया दुनिया में Europe. What was Europe? What happened there? What was the nature of Europe? So France is there, and France के south में is Spain, and you have to draw maps in European history. जितनी चीजें हैं उनके साथ सब मैप्स मैंने ऐड किए हुए हैं
आप ट्रीटी कोई भी याद नहीं करें थ्रू आउट इंटायर 200 years जस्ट मैप ड्रॉ करने आपकी ट्रीटी से वो सारे मैप्स में ऐड कर दें इनसाइड से बट सर वो मल्टीपल मैप्स नहीं हो जाएंगे मल्टीपल हाँ मल्टीपल हर ट्रीटी के ऊपर अलग अलग मैप्स हैं हाँ मल्टीपल सोर्सेज मल्टीपल मैप्स एक के थ्रू तो ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल 200 years ऑलमोस्ट टाइम पीरियड हमने कवर किया था मोर देन 200 years सो देयर विल बी मल्टीपल मैप्स लेकिन मैप मस्ट आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे अच्छा स्कोर के लिए सो फ्रांस के साथ में स्पेन एंड देन there's Italy, if you can identify Italy in that map. Like अगर Italy को देखें तो Italy नहीं लिखा हुआ but it's not Italy. Like it's Naples, Naples, Tuscany, Modena, Venice, and say the Venetian Republic, Venus. So Italy was not a single unified state. Numerous Italian states. Italy unified एक single को करेगा 1860-71 में था. तो इसीलिए मैप में भी उसने नहीं लिखा है. What you can do with Italy? ये countries in further states के नाम याद करना very difficult. What you can do is northern Italy, central Italy, southern Italy. ये तो कर सकते नॉर्थ सेंटर साउथ क्योंकि इसमें फिर अलग हमें थोड़ी सी रिटेन करने पड़ेगी तो इतनी आपको दूर करनी पड़ेगी नॉर्दर्न इटली में क्या था साउथ में सेंटर में क्या नाम जो है नाम याद करें इतनी ज़्यादा फैक्ट्स नहीं याद and then the Balkan region is like Ottoman Empire जहाँ Bosnia is map if you can identify Bosnia Serbia, Bosnia, Greece, Albania, that is the Balkan region. This entire region was in the Ottoman times. This is the Ottoman Empire. This is Balkan region. So the Ottoman Empire. So Usmania Khilafat के जो टर्क्स थे उनकी हुकूमत थी ईस्टर्न यूरोप के अंदर. ईस्टर्न यूरोप में सदर्न पार्ट है, इसको बाल्कन रीजन है. So Romania, Bulgaria, Greece, Albania, Serbia, Montenegro. These states were in that part. So Balkan region was under the Ottoman Turks. And then this is the Europe. So this is red line here and the red line. Then we have one red line. That is Holy Roman Empire. Central Europe is a Holy Roman Empire. So church was an influential player in Holy Roman Empire. So in the terms of politics, church was an influential player in Holy Roman Empire. For church, Catholic Church, की allegiance के through political leadership यहाँ दी जाए, जो कि normally खानदानों को दी जाती थी जो उनके खानदान थे, and it was predominantly it was the Habsburgs. Austro-Hungarian Empire, जो Austria-Hungary यहाँ पे, Austro-Hungary का जो ruling family थी Habsburgs. Habsburgs politically in terms of security वो Holy Empire की जो ये रियासतें हैं, जो German रियासतें हैं, इसको dominate करते हैं. तो Germany यहाँ पे बनेगा. It is Bavaria, Saxony, Frankfurt, Hanover, Mecklenburg, ये German रियासतें हैं. Germany को भी नहीं है और single unified Germany, with various numerous states, जो कि Holy Empire की दिशा में थी. So Holy Roman Empire politically Catholic Church was influential there. Church की allegiance के through यूरोप के खानदानों को यहाँ पे political हुकूमतें दी जाती हैं. Bourbons या Habsburgs. Predominantly Habsburg खानदान जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का रूलिंग खानदान था, वो होली रोमन एम्पायर के अंदर जो था वो स्ट्रॉन्गर प्लेयर. सर ये कब का मैप है? It's before the revolution, 1789. Europe stopped not. सर ये हंगरी तो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, उसका हिस्सा था, तो आपने इसको होली रोमन एम्पायर से अलग कर दिया. हाँ, Austro-Hungarian Empire is a separate empire. Austro-Hungarian Empire was like part of Holy Roman Empire. Holy Roman Empire को ये dominate करती थी, ये empire अलग से. Austro-Hungarian Empire जो थी वो politically Holy Roman Empire के अंदर influential dominant player थी. और इनके अपनी अलग reputation भी थी, यानी कि Habsburg rulers थे Austro-Hungary Empire के. अब Habsburgs को church, Catholic Church के जो leader होंगे उनकी allegiance चाहिए होगी, उनकी security चाहिए होगी Holy Roman Empire के अंदर influential player बनेंगे. सर क्वेश्चन ये था कि हंगरी होली रोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं था. So they were the part of that. ये जब entire it was Austro-Hungarian Empire. Austro-Hungarian Empire के अंदर जो है इसको शामिल किया जाता है. So they were part of that. Holy Roman Empire. सर ये पॉलिटिकली एक ही मतलब एक ही कंट्री है, ये डिफरेंट स्टेट्स के कर दिया शामिल. Holy Roman Empire या Central Europe या होली रोमन different states. और फिर जो जैसे इसके अंदर ये बाद में ये इलाका जो predominantly Germany बने. Holy Roman Empire के अंदर जो इलाका है ये जर्मनी बनेगा. इसी तरह आप देखिए फ्रांस के नॉर्थ में देख ना
ऑस्ट्रियन नेदरलैंड्स, Yes, sir. फ्रेंच के नॉर्थ में देखें ऑस्ट्रियन नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड्स के अंदर अगर आप देखें डॉट एंड ब्रसेल्स, ब्रसेल्स कैपिटल है बेल्जियम, तो बेल्जियम वाज अंडर द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर। इसीलिए देखें ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर का जो कलर है वही ऑस्ट्रो नेदरलैंड्स का, Austrian Netherlands. So Netherlands, Belgium was under Austro-Hungarians. Habsburg family जो थी वो influential player थी Belgium के अंदर Netherlands में, और Austro-Hungarian ruling family Habsburg they were the influential players in Central Europe, in German states as well. German states के अंदर भी influential players थे, Belgium, Netherlands के अंदर भी influential player थे, and of course the separate entity was there, that is Austro-Hungarian Empire. सर थ्रू पोप कंसेंट बन जाते थे या कोई इलेक्शन होता था रूलर, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के लिए। हाँ, इसमें ये कि पोप की कॉन्सेंट पास है। सिर्फ पोप क्या था कि फिलहाल ऐसा अपने हेड पर जाए तो हाँ, पोप की इसमें इलेक्शंस को सिर्फ प्रोसेस नहीं होगा, पोप वाज द डोमिनेंट फिगर, तो पोप की कॉन्सेंट होगी और फिर पॉलिटिकली वो जाके लिए गए, वो सिक्योरिटी टर्म्स में भी इनका कंसेंसस ऑब्वियसली चाहिए होगा कि इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इन ये जो रियासतें हैं होली रोमन एम्पायर में, in terms of security they would concede, they would give consent देंगे कि Habsburgs are going to be the dominant players, and then overarching was the political you had been Catholic Church push the religion side, and internally भी ये commitments ensure करेंगे, they would be willing, and overall it would be the church, ऐसा नहीं है कि इनकी consent के बगैर ही चलेगा। So France and the Italian states and Holy Roman Empire के concepts थोड़े से and Austro-Hungarian and Habsburg जो यूज कर रहे थे, ये पिकनिक है जो फ्रांस के अंदर इंकलाब आएगा, और फिर ये Holy Roman Empire early 19th century के अंदर नेपोलियन इसको abolish कर देगा, and it would become a confederation of Rhineland, फिर Rhineland को ये change करेंगे German confederation के, और फिर German confederation coming lectures we will discuss these points, but as far as this point is concerned, कि फ्रांस के साथ यूरोप को देख लेंगे, फ्रांस ये भी एक मुल्क नहीं है, इटालियन स्टेट्स है, जर्मनी सिंगल यूनिफाइड मुल्क नहीं है, अपने न्यूमरस जर्मन स्टेट्स हैं, पर जहाँ जर्मनी का मैप है ये होली रोमन एम्पायर के एरियाज के चले दिए जाते हैं, so that is the brief map of Europe, and then France, major cities of France like Nice, Paris, Strasbourg, Lille, Nantes, so France जहाँ पे इनकलाब होती है, revolution होती है, so moving towards the first content and before discussing the maps, the content of the French Revolution come. These questions have been asked in previous years. Normally we'll be interested in different जो French Revolution के different aspects के जो पिछले 20 सालों में questions आए हैं वो क्या है, we'll be discussing in these slides. और इसमें दो ही questions आए हैं Enlightenment के ऊपर. French philosophers के influence को discuss करें, Voltaire, Montesquieu, Rousseau के influence को discuss करें. International relations is all about European history. Political science के साथ कुछ concepts overlap करते हैं, but predominantly IR is all about European history. तो वहाँ पे it's going to facilitate you nice writing के लिए काफी help करते हैं, क्योंकि ऐसे आपने देखे 6 तो इसी IR से. European history is that this is all about. European history is about great European powers and it's about their foreign relations. Interstate relations Europe की great powers. So 19th century में the great powers were Great Britain and Russia and Austro-Hungarians. America was not a superpower. So 20th century में America was a superpower आया when we got it, but previous it's United Kingdom and Russia and Austro-Hungarians. So the first concept is Enlightenment, ideas of Enlightenment, headings which बनाई हैं, Enlightenment, despotic rulers कौन से example factor. So Enlightenment, age of reason इसको कहा जाता है, the age of reason. उर्दू में इसको क्या कहते हैं? दलील कह सकते हैं, रोशन ख्याली की थ्योरी क्या? रोशन ख्याली की थ्योरी Enlightenment. So इसे lighting light करेगी या कुछ light का illuminate करेगी dark Europe. So Enlightenment is dark times में यूरोप था, रोशनी जो है इनकी रोशनी फैलेगी और यूरोप को illuminate करेगी and the progress will be. That is our age of reason. Enlightenment is the age of reason. Normally so 18th century, 17th century philosophers के ideas के साथ British philosophers, French
and the German philosophers. So, age of reason. Your ability, your faculty to think. Thinking is basically the age of reason. Thinking your emphasize your ability, thinking process के ऊपर emphasize किया गया. So age of reason in 1920 and is it just इस era के अंदर जो arguments थे, the argument was human beings are rational actors. Human beings in time जो है वो rational actor, अकल करी, but they have to use their rationality, thinking process को use करना पड़ेगा. So age of reason is about the use of your faculty of reasoning जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए. And the core concern was what is out there in the natural world. It was about the reality of existence. Yes, one get the essence of something. ये अभी beginning है तो परेशान नहीं होना, ये सब मैं clear करवाएगा. Just give me some essence. इसी को हम IR में भी आप लोग पढ़ते हैं एडवांस स्टडीज के ontology, epistemology अभी हसन साहब लोग एसेंस भी दे दिए थे तो वहाँ ढेर सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होंगे. So ontology. So ontology, the concept of ontology is concerned about the existence of reality. कि क्या reality हकीकत या truth या objective laws exist करते हैं नहीं करते. So first देखो enlightenment के era के the whole concern was what is out there in a natural world, physical world. So that was the major concern. What is out there? And they were concerned about the natural world. What is out there in the natural world? They wanted to know the existence, the reality of existence, the essence of something, the physical world, objective laws and truths. Scientific revolution की beginning was from that point. कि दुनिया की हकीकत क्या है, कि दुनिया की कोई हकीकत है, तो वो एक हकीकत है या ढेर सारी हकीकतें हैं. Single truth है या multiple truths, single meaning है या multiple meanings है. So that was the beginning. What is out there? हम कमरे में बैठे हैं तो बाहर सूरज कहाँ पे है, चांद कहाँ पे है, कहाँ नहीं, जमीन घूम रही है या नहीं, फ्लैट है या वॉल रोटेट कर रही है. That was major concern. What is out there? So they wanted to know the reality of the external world, the natural world. दुनिया को समझना चाहते थे कि दुनिया की हकीकत क्या है. दिन रात में क्यों बदलता है, कैसे होता है, seasons क्यों change होते हैं. So they wanted, the first person was what they were interested in knowing that thing. What is out there, the existence, the reality of existence, an essence of something. हकीकत किसी चीज की जानना चाहते थे. Truths exist करते हैं, objective laws हैं या नहीं, 2 + 2 = 4 है या नहीं है, या कैसे है. They were interested in that. That was the beginning point. Human beings are rational nature, and in the age of reason, during Enlightenment time period, they were concerned about the reality of the existence in natural world. कि हकीकत है दुनिया की या नहीं है. And then they came up with the laws. This one the natural laws. कि कुदरत के कानून है, लॉ है, नेचुरल है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, ट्रुथ्स है. अब विलेद आज जहाँ हमारे वापस आएगी, अब केनिया, इथियोपिया, जहाँ मर्जी चले जाए वो वापस आएगी. नेचुरल वर्ल्ड, फिजिकल साइंसेस के, मैथमेटिक्स के नेचुरल ऑब्जेक्टिव लॉज हैं, ट्रुथ्स एग्जिस्ट करते हैं. So that was the beginning. न्यूटन के कानून जो है, न्यूटन ने वो लिखे, उसने कहा ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है, and he can know that reality. हम what is out there, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड यानी ज़मीन मूव करती है या नहीं करती, रोटेट रिवॉल्व करती है या नहीं करती, हम ये चीजें जान सकते हैं. We can know about that. So natural laws, objective laws exist करते हैं, we can know that. So as far as this concept of ontology is concerned, ontology means about knowing the reality of existence. कि क्या बाकी ज़मीन ओवल शेप है, रोटेट रिवॉल्व करती है, या इसकी कोई हकीकत है या नहीं. अगर आप सिर्फ अर्थ की हद तक इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, ज़मीन फ्लैट है जैसे इस्लामिक थ्योरी के अंदर है, यूरोपियन फिलॉसफी में भी यही है कि स्टैग्नेंट है, मूव नहीं करती. बट देन दे Galileo came, और कोपरनिकस came, उन्होंने कहा नहीं, ये वॉल भी करती है, फ्लैट रोटेट भी करती है.
रोटेशन रेवोल्यूशन से दिन रात बदलते हैं और सीजन्स पे चेंज होते हैं. So they said what is out there about the truth about the ज़मीन के बारे में अगर हम बात करें इसको आंसर की अर्थ की शेप की उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन की, ontology is concerned about the truth about the reality of existence कि ज़मीन क्या वाकई ही ओवल शेप है और रोटेट रिवॉल्व करती है नहीं करती. तो नेचुरल साइंटिस्ट जो थे they came up with the law कि ऑब्जेक्टिव लॉज एग्जिस्ट करते हैं और हम उसको जान सकते हैं, लेकिन हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. We have to use the faculty of reasoning. और अगर इस्तेमाल करने के लिए would come with a scientific method. उस मेथड को सर फ्रांसिस बेकन ने बताया कि क्या मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो ट्रुथ्स को जान सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लॉज को जान सकते हैं. ऑब्जर्वेशंस करें, ऑब्जर्वेशंस करके किसी भी फिनोमिना को क्या कि किसी भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, फिनोमिना है, कोई भी इशू है, पजल है, जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशंस करें. ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें. पैटर्न्स आइडेंटिफाई होंगे देन यू आर गोइंग टू बिल्ड अ हाइपोथेसिस. और फिर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और उसको अगर वेरीफाई होता है तो मूविंग टुवर्ड्स थ्योरी मेकिंग एंड देन इवेंचुअली लॉ मेकिंग. तो ये एक मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो है वो क्राफ्ट किया गया जैसे the human beings are rational actors and they can know what is out there. The truth is out there and we can know the truth which is out there. How? By following scientific methodology. Scientific methodology को अपनाते हुए, अकल का इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया की हकीकत, हम नेचुरल वर्ल्ड की हकीकत के बारे में जान सकते हैं. नेचुरल दुनिया के अंदर ट्रुथ एग्जिस्ट करता है. That was the beginning point. कि दुनिया कैसी है हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, उसकी हकीकत है हम उस हकीकत को जान सकते हैं साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूज करके. तो we can know existence क्या है इसकी. ontology is concerned about with the essence, reality क्या है, दिन और रात क्यों चेंज होते हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है, उसके पीछे हकीकत है और हम उस हकीकत को जान सकते हैं. That is the beginning point. Ontology is concerned with that, about knowing the reality of existence. कि क्या truth exist करता है या नहीं करता. That is the beginning point. अगर जैसे नेशनल साइंटिस्ट ने कहा कि जी ट्रूथ तो एग्जिस्ट करता है, the second question was that अगर हकीकत एग्जिस्ट करती है दुनिया की तो फिर आप उस हकीकत को कैसे जान सकते हैं. एक तो फ्रांसिस बेकन ने कहा कि आप साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू उस हकीकत को जान सकते हो. एंड देन दे केम अप विद दिस कांसेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. Epistemology, the study of knowing. The study of knowing. Then how you would know कि ज़मीन फ्लैट है या ओवल शेप, क्योंकि वो रोटेट या रिवॉल्व करती है या नहीं करती, इस हकीकत को आप कैसे जानोगे. The study of knowing it's about epistemology. Epistemology क्या है जिसमें हम जानते हैं कि ज़मीन रोटेट रिवॉल्व करती है नहीं करती, क्या इसकी एग्जिस्टेंस है, क्या ये ट्रूथ है या ट्रूथ नहीं है. So epistemology is concerned with the study of knowing, that how you know about something, that whether human beings are nasty, egoistic and brutish. यानी हम कहते हैं कि इंसान जो है सेल्फिश. Greatest theory classical realism Thomas Hobbes जब वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, वो कहते हैं इंसान सेल्फिश है. तो ये क्या है उनकी ontology है कि इंसान क्या, that is Hobbesian ontology कि इंसान की फितरत कैसी है. हॉब्स कहता है कि इंसान जो है वो सेल्फिश है. ये हॉब्स ने कहा कि इंसान जो है वो सेल्फिश है, नास्टी है, वायलेंट है, नार्सिसिस्ट है. तो ये हॉब्स ने कहा कि इंसान ऐसा है. अब हॉब्स ने ये कैसे जाना कि इंसान नास्टी, ब्रूटिश, वायलेंट है या नहीं है. That process of knowing is epistemology. और उसने इंसान की फितरत के बारे में कहा कि वो सेल्फिश है. अब वो है या नहीं है, there is a question. So epistemology is the study of knowing, that how you know about something. And ontology is concerned with about the essence of something. यानी आप क्लास में बैठे हम जो सब इंडिविजुअल्स हैं, हम क्या हैं, हमारी एसेंस क्या है. जैसे हम बैठे हैं, क्या हम घर में भी ऐसे ही रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे ही हैं. तो क्या हमारी एसेंस हम अंदर से ऐसे ही है जैसे हम क्लास में बैठे हैं. तो एसेंस वुड बी डिफरेंट. जो साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की दो शक्लें हैं, एक इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल हमारा एक्सप्रेशन है. एसेंस हकीकत क्या है आपकी. तो हम यहाँ बैठे कोई भी शख्स हम आपस में किसी की हकीकत, कोई है इंसान है क्या, उसकी हकीकत क्या है नहीं जान सकते.
Ontology is concerned about knowing the essence of human beings, the essence of the earth oval shaped है या flat. Ontology is concerned about knowing the essence of individuals, about the actual physical world, what is out there. And epistemology is concerned about knowing that how you would come to know कि ज़मीन की रोटेट बहुत करती है. ये जो मैंने यहाँ एक ontology draw कर दी कि अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, ये ontology draw कर दी. मैंने कहा ये हकीकत है. गलीलियो ने कहा, कोपरनिकस ने कहा कि ज़मीन रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है. उन्होंने कहा ये ज़मीन की हकीकत है, ये ज़मीन की ontology. But how they came to know about that कि ज़मीन रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, वो उस हकीकत को कैसे उन्होंने जाना? That is the question of epistemology. और फिर हम किसी भी चीज़ की हकीकत को कैसे जानते हैं? And then they came up with the ideas of rationalism and empiricism. Rationalism and empiricism. Beginning है किसी ने परेशान किया, ये चीज़ें सारी चीज़ें रोज हैं. मैंने बड़ा खपा हूँ इन concepts के ऊपर. I make sure कि आप लोगों को समझ आए. So epistemology is concerned the study of knowing that how you know about something. Well, एक epistemology के अंदर method है rationalism. Another is empiricism. ये दो methods पहले जो है वो बताए गए कि इन methods के थ्रू हम जानते हैं दुनिया की हकीकत को या अपनी बारे में या माशरे के बारे में या politics. These are the two methods through which we come to know about the existence of the outer world or even the social world. In methods के through. So epistemology is concerned with the study of knowing that how you know about something. And these are the two methods through which we know about something, that whether the earth is a flat or not. ठीक है यहाँ तक rationalist ने ये कहा use of reason के through we come to know about that. अकल का इस्तेमाल करके हम जब दुनिया की हकीकत के बारे में किसी की एसेंस के बारे में बताते हैं. Reason, thinking, अकल के इस्तेमाल के through. And then empiricism, senses. Your sense experience would determine, your lived sense experience would determine the reality of something. So ये दो methods. Empiricism, senses. पानी अभी बहुत ठंडा है, गर्म है, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर इंडक्शन में तो पहले काम तो लोग नहीं ठीक है ठंडा पानी नहीं. Touch, smell, how you feel. Senses जो है हम senses के through जानते हैं दुनिया की हकीकत को अपने बारे में या माशरे के बारे में. That is empiricism. Sense experience के through we come to know about it. And then another is rationality. अब हमारी senses तो हमें ये बताएंगे कि सूरज तो नजदीक ही है. अगर आप किसी पहाड़ी की टॉप पे चढ़े वो लगता है कि बस थोड़ा सा रहेगा. Senses नहीं बताएंगे हमें. तो senses क्या कह रही है उसका illusions है, sometimes इंसान धोखा खाता है. तो फिर कैसे हकीकत को जानेंगे? Rationalism और empiricism ये दो methods हैं जिसके through आप जानते हैं. The study of knowing is the further method, and that is empiricism and rationalism. Rationalism को जो major thinker है that is René Descartes. French mathematicians थे उसकी एक बहुत ही major statement है. I think therefore I am. René Descartes. French mathematician थे. I think. Age of reason without. So I think. पहले मैं सोचूंगा therefore. यानी मैं कौन हूँ मैं सोचूंगा तभी बताऊंगा who I am. What is my essence? How I come to know about मैं अपनी हकीकत के लिए आपसे पूछेगा आप कौन हैं तो आप कैसे बताएंगे मैं यहाँ पढ़ता रहा ये किया वो किया. तो दिमाग को पहले घुमाएंगे. You would be using your faculty of reasoning. तो यही René Descartes कह रहे हैं. I think therefore I am. मैं अपने बारे में भी कैसे जानता हूँ जब मैं हकीकत इस्तेमाल करता हूँ. I think therefore I am. That is rationalism. हम अकल का इस्तेमाल करते हुए जानते हैं what is out there, what is the reality of the natural world, what is the essence of human being, what is the reality of existence. This is how they're talking. And then empiricist thinkers, sense experience.
lived experience, senses के थ्रू हम किसी चीज के बारे में जानते हैं। यानी ये बॉटल का कलर ग्रीन है, how I come to know about that? Sense experience, that is empiricism. Sense of sight के empiricism ना senses को इस्तेमाल करके कहते हैं तो इसका कलर ग्रीन है। So this is how we come to know about the things, reality of the natural world, and we can also know the reality of our own self. यानी हम सिर्फ दुनिया की natural world की हकीकत को नहीं जान सकते, फिर history, political science, social sciences में ये कहा गया कि हम natural world की हकीकत के बारे में तो चलो जान सकते हैं rationalism, empiricism के थ्रू, हम इंसान की हकीकत के बारे में भी जान सकते हैं। हमें इंसान के political, social, economic, psychological institutions को भी theorize करने की जरूरत है, हम उनकी हकीकत भी जान सकते हैं। यानी कि सिर्फ अर्थ की हकीकत नहीं है, natural physical world की हकीकत नहीं है। We can know about the essence of human being, and from there it would emerge psychology, which is concerned about the essence of human being. जब आप इंसान के माशरे के बारे में बात करेंगे sociology, आप उसके बाद उस इंसान के माशरे के सियासी इदारों की बात करेंगे, that is political science, और उसके माशी distribution of resources की बात करेंगे, that is economics. So this is how we develop these institutions, these various disciplines. So age of reason, that human beings are rational naturals, वो अकल रखते हैं, and then they have to use that reason through following scientific methodology. And then through following that scientific methodology, they can come to know about the existence of the natural outer world. They can know the reality of the outer world, the essence of the outer world. And that is related to the concept of ontology. But how we come to know, physically, rotate करती है नहीं करती, and that is through epistemology, the study of knowing. We come to know through this concept of epistemology, and further when we dig it, that is through rationalism and empiricism, we come to know about the reality of something. And then from there, they will be further moving towards deduction and induction. Deduction and induction. In case bottle का color green कैसे है, मैंने the color is green. I came to know through my senses. तो induction के अंदर आप उस process के अंदर participants होते हैं, उसमें involved होते हैं, ethnography के अंदर. So that is induction. जिस भी किसी माशरे के बारे में जानना है तो पार्टिसिपेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होके उसकी हकीकत के बारे में जानना है, दैट इज इंडक्शन। डिडक्शन 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, that is deduction. You're deducing from one formula to another. Mathematics is all based on rationalism and deductions. Theory application, जब आप theory supply करते हैं आयात के अंदर तो वो भी deduction, theory reduce कर देते हैं, उस theory को फिर explain करते हैं। Rationalism and empiricism. सर ये साइंटिफिक मेथड जो है, ये एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म का कॉम्बिनेशन है। इसी के अंदर ये साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी के अंदर ये मेथड्स, ये वेरिएंट्स। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे, अब रैशनलिज्म में भी आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे और एम्पिरिसिज्म में भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दी जाती है उसमें ये प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ट्रिगर हो जाए कि आप किस मेथड को यूज कर रहे हैं वो वेरी करेगा। जैसे कुछ रैशनलिस्ट थिंकर्स हैं, कुछ एम्पिरिसिस्ट हैं। जॉन लॉक वाज एम्पिरिसिस्ट थिंकर, डेविड ह्यूम स्कॉटिश फिलोसोफर थे, ही वाज एन एम्पिरिसिस्ट थिंकर। सेंस एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू उसने कहा हम दुनिया की हकीकत के बारे में जानते हैं। तो जब ये आइडियाज मर्ज हुए थे तो जो रैशनलिस्ट थे वो क्या बातों को डिस्कार्ड कर देते थे, मतलब एम्पिरिसिस्ट को दे हैड टू चूज वन साइड या नहीं, discard इस तरह से discard नहीं करेंगे। पहले rationalists came and then that theory was like refuted by the empiricists, और फिर उसके ऊपर ये theoretical developments होती रही। Parallel उन्होंने कहा कि नहीं हम we think we come to know about the reality of the natural world through our thinking process, but we can also know through our sense experience. यानी अकल के इस्तेमाल से हम जानते हैं, लेकिन उन्हें next coming followers आए उन्होंने कहा नहीं हम जो है वो senses के through भी सीख सकते हैं। So further now knowledge was expanded here, and further is to further more develop here. That is Immanuel Kant. उसकी है एक book Pure Reason. उसने कहा कि ये दोनों methods के through we come to know about the reality. ये देखिए sense experience के through हमें पता चला green है, लेकिन ये sense experience है इससे हमें पता चला ये green है, लेकिन ये green हमारे दिमाग के boxes में जाएगा।
वो कहेगा कि हाँ ये ब्लू नहीं है, ये रेड नहीं है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। तो बाइनरीज है आपके दिमाग के अंदर, अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं। एसेंस ऑफ नॉलेज इज ह्यूमन बीइंग्स। जो फाउंडेशन है इल्म की वो इंसान है। इंसान के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी दिमाग के अंदर हमारे को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बने। ये ग्रीन है तो वो दिमाग के अंदर ये सेंस एक्सपीरियंस दिमाग के अंदर गया, उसने कहा ये ब्लू नहीं है, रेड नहीं है, ये ग्रीन है। वो जो अलग अलग बॉक्सेस हैं उसने मुझे कहा कि ये ग्रीन है। तो ये थी प्योर रीजन मैनुअल कांत का कॉन्सेप्ट कि सेंस एक्सपीरियंस को इंसान इंटरनलाइज करते और फिर दिमाग के आपके जो बॉक्सेस हैं वो आपको फिर उसकी ट्रूथ के बारे में बताते हैं। दिस इज हाउ दैट दे आर कमिंग अप विद दीस आइडियाज। एक्सप्लिसिट रिफ्यूटेशंस नहीं थी कि कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जैसे पहले आई थिंक देयरफॉर आई एम, एंड देन दे केम विद दिस आइडिया, you know, I come to know through my lived experiences. And then Kant came, he said, no, sense experience, and then thinking, and then I come to know about the reality of the world. So this is how they are dealing with that. And then came the phenomenology. यहाँ पे last point, बस then I take it. Then came phenomenology. लेकिन I think therefore I am. यानी मैं कौन हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं think का इस्तेमाल करूँगा? I think therefore I am। तो पहले मैं क्या करूँगा, think करूँगा, फिर मुझे अपनी हकीकत के बारे में पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। Phenomenology ने कहा कि before you think, you are something। I think therefore I am। ये जब मैं सोचूंगा तब मुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। Phenomenology ने कहा कि इससे पहले कि आप सोचें, आपकी existence तो है। That is study of being। Husserl, Heidegger की studies हैं, literary theories के अंदर, structural theories हैं literature के अंदर। तो before you think, यानी मैं इससे पहले कि मैं अपना दिमाग को रोटेट करूँ, उसको घुमाऊँ, कॉग्निटिव स्किल्स को चलाऊँ ताकि मैं बात कर सकूँ, before I think, पहले I, the study of being। तो phenomenology is concerned with the study of being। कि आप हैं क्या, आप इसके बारे में जाने। आप सोचते क्या है वो तो बात की चीज है, आप खुद के बारे में तो जाने कि आपकी हकीकत क्या है। अगर आप अपने ही एसेंस के बारे में जान लेंगे तो आपके लिए इदारे बनाना भी कोई मुश्किल नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस बनाना भी quite simple। That is phenomenology। So the concept of a being, and I think therefore so we come to know through phenomenology, rationalism, empiricism and phenomenology। तो ये जो theory है rationalism, empiricism, इसको कहते हैं positivism। Positivist philosophy। अब समझ आ रही है आप लोगों को जो पहले पढ़ते रहे हैं। So that is positivism। Positive philosophy, positivist philosophy ये है। What is out there? Natural laws, the truth is out there। How we can come to know the truths? Through rationalism and empiricism, not phenomenology। अभी phenomenology नहीं, वो बहुत later on 20th century में phenomenology, Husserl and then Heidegger आएंगे, the German philosophers। But यहाँ तक रखें, how we come to know, the study of knowing, how you come to know about something, the epistemology, how you come to know, epistemology is the study of knowing, and the ontology about something, the truth, the essence of something वो क्या है। So through epistemology we come to know about ontology। But positivism की जो theory है आया जब इसे philosophy में हम पढ़ते, that is rationalism, empiricism की positivist methodologies। हमने कहा अगर का इस्तेमाल करें सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू हम दुनिया की हकीकत क्या है, इंसान की हकीकत क्या है, हमारे इदारों की हकीकत क्या है, उसके बारे में जान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लॉज ट्रूथ्स एग्जिस्ट करते हैं। That is positivism। 2 + 2 = 4 मैथमेटिक्स में है, एक्शन रिएक्शन है, नेचुरल साइंसेस में एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, तो हम दुनिया की पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर भी हकीकत जान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लॉज सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, सोशल अफेयर्स के अंदर भी ऑब्जेक्टिव लॉज एग्जिस्ट करते हैं। वी कैन कम टू नो अबाउट दोस ट्रूथ्स बाय फॉलोइंग empiricism and rationalism। इन दो वेरिएंट्स के थ्रू we can come to know about the existence of something। That is positivism, epistemology and ontology। बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बहुत देर लगती है समझने, but hopefully I tried maybe। Yeah, any questions so far? It's just like Sir, I want to know about induction. I'm still not sure about induction। induction के अंदर
जो भी रिसर्च पजल है, जो भी फिनोमिना जिसको आप एग्जामिन कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे इंडक्शन के। जैसे इस बॉटल का कलर मैंने भाई ग्रीन है, तो मैं आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस, द कलर ग्रीन थ्रू माय सेंस एक्सपीरियंस। तो एम्पिरिसिज्म क्या कहती है? सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू, मैंने इंडक्शन के थ्रू कहा कि इस बॉटल का कलर इज ग्रीन, ब्लू। इफ आई टॉक इंडक्शन में आप सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। जिप्सीज एक माशरा है, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस माशरे में जाएंगे, वहां के बिहेवियर्स को रेगुलेट देखेंगे कि कैसे वो रहते हैं, एंड देन यू कम अप विद योर व्यूज कि किस तरह का माशरा क्या है। सर माय क्वेश्चन इज दैट ये जो सेंसेस हैं और थॉट्स हैं सर, सिंस हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सर ये एनलाइटमेंट के दौरान 18th सेंचुरी में क्या खास बात है जो इसको इतना कहा जाता है एनलाइटमेंट 18th सेंचुरी में ही है? बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेरोडोटस और थ्यूडिडाइडिस सेंसेस हुआ भी थे, थॉट्स हुआ भी थे, तो इसको स्पेसिफिकली 18th सेंचुरी के साथ क्यों लिंक किया जाता है? हाँ, क्योंकि उसमें ये हुआ कि प्लेटो ने भी एसेंस की बात की, प्लेटो का आइडियलिज्म है, फिर अरिस्टोटेलिस के कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्यूसिडाइड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके बाद वो कनेक्शन जो है वैसे ही हो गया, वो उसी एरिया में कंफाइन हुआ। इनलाइटमेंट यूरोप के लिए स्टार्ट हुई, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, एंड देन फ्रॉम यूरोप दे मूव टुवर्ड्स अमेरिका एंड देन अफ्रीका एंड एशिया। तो ये एक 17th-18th सेंचुरी के जो फिनोमेना है, ये अब रुकेगा नहीं, ये अब ग्रेजुअली पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट करेगा। मॉडर्न वर्ल्ड की जो फाउंडेशंस हैं, दैट इज इनलाइटमेंट। तो ग्रीक एरा में बिगिनिंग हुई, फिर एक वो कनेक्शन लॉस हो गया। मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया के वो जो एथेनियंस डेमोक्रेसी जहाँ थी वो खत्म हो चुका है, फिर डिक्टेटरशिप्स ग्रीस में आई, फिर हम रोमन एम्पायर का बड़ा दौर देखते हैं, रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर लॉ मेकिंग की गई, बट अगेन एक डिस्कनेक्शन है, वो प्रोसेस फैलेंगे नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ये जो प्रोसेस जो एक रीजन में शुरू हुआ वेस्टर्न यूरोप के लिए, फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड जर्मनी, then it would spread, और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशंस आर इन इनलाइटमेंट। इनकी जो ये फाउंडेशंस है, हाउ वी नो अबाउट द रियलिटी ऑफ समथिंग, दैट इज, तो ये अब रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस, ये मॉडर्निटी का प्रोसेस है, ये रुकेगा नहीं। थ्रूआउट यूरोपियन हिस्ट्री वी विल टॉक अबाउट दैट, और मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशंस जो बुनियाद है वो यहाँ पे रखी जाएंगी। और इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फिक्स मीनिंग्स हैं या नहीं है, and yes there I will ask you concepts fixed हैं या नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉजिटिविस्ट ये कहेंगे फिक्स फाइनेंस है, तो क्या फिक्स है या नहीं है, जो उसके ऊपर वो डिबेट करते हैं फिक्स है या नहीं है। बट अगेन आई एम मूविंग बैकवर्ड्स टू मेक इट बिट सिंपल। इनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन। The first point, human beings are rational actors. वो तो लिखते हैं, और अगर वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी परस्यू करें, उसको यूटिलाइज करें, they can come to know about the reality of the natural world and what is out there, the existence, the reality of existence, the ontology. They can come to know about the truths of the natural world through following empiricism and rationalism, the positivist methodology. They can come to know about the truth. So that was the beginning point of Age of Reason, which is philosophically, and then we will be taking. But abhi humne kuch slide hi start ki, so I will move towards that, and then the data would be there. तो ये एक बुनियाद है। अभी हमने इनलाइटमेंट का सिर्फ एक पॉइंट किया, अभी ढेर सारी बातें करेंगे, then gradually एक डेढ़ घंटे के बाद almost it would take more than maybe that, and then eventually it would be, things would be making sense. तो अभी बताना नहीं है, जब तक मैं मान ही लूँगा तब तक। So moving towards the text, थोड़ा सा पढ़ के लेने का है क्या बस बातों से। So moving, point one, then I'll share these slides. So इस पे नहीं आपको परेशान होना, डाटा तो आपके पास है, कुछ लिखना चाहते नहीं कि मैनेज, बट ये डाटा आपके पास है। Enlightenment discourse made people think critically. Enlightenment के दौर में जो हालात किए गए, उन्होंने लोगों के सोचने के अंदाज को बदल दिया। डिस्कोर्स, डिबेट्स हुई एनलाइटमेंट के लिए, लोगों के सोचने के अंदाज को ही बदल दिया। कैसे बचा, मैं एक एग्जांपल यहाँ देके कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं 1789, तो एक क्रिटिकल साइंस के अंदर एक थियरी डिजाइन थी, लेकिन इज आई थिंक बिकॉज़ गॉड मेड हिम द गाय, so that was
the ideas of that idea. Enlightenment thinkers like they would challenge that idea. The king is the king not because God made him the king, it's the people who are source of power. And it's the people who are going to elect their representatives. Enlightenment era में क्या किया जो existing ख्यालात थे उसको challenge किया गया, undermine किया गया, and then came up with new ideas. कि लुई 16 बादशाह जो है उसको गॉड ने नहीं बनाया. अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर we are the essence of power. It's the people who are the hub of power. We are going to determine that who is going to rule over us. That is popular sovereignty. John Locke. तो क्या किया एंलाइटमेंट के ख्यालात ने लोगों के सोचने के अंदाज को तब्दील कर दिया कि बादशाह इसलिए नहीं अल्लाह ने बना दिया जो अब हम इसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते. तो गॉड नॉट इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं. यहाँ पे हम थोड़ा सा यूरोपियन इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं. So पहले it was the God made in the game. Enlightenment क्या नहीं God made it's the people who are source of power. लोगों ने जो है वो अपॉइंट किया. तो लोगों के सोचने के अंदाज taking back to the century, and then they would bring a revolution. अगर बादशाह डिलीवर नहीं करेगा वो कहेगा हमारी मर्जी हम अपनी मर्जी से अपने हुक्मरानों को लगाएंगे. They would be choosing the new leadership in France. तो enlightenment क्या करेगी लोगों के सोचने के अंदाज को बदल देगी. And then they would challenge the existing institutions and ideas, politics or economy or society or institutions. And how they come to know that Louis XVI को गॉड ने पॉइंट नहीं किया बल्कि हमने किया. How do we come to know about that? Through empiricism and nationalism. That is the study of knowing. पॉइंट ये है कि लुई 16 को गॉड ने पॉइंट नहीं किया फ्रांस का हुक्मरान. जॉन लॉक की बात करें, रूसो की बात करें, पॉइंट वन इज लुई 16 को गॉड ने पॉइंट नहीं किया. How John Locke came to know about that कि God ने Louis 16 को पॉइंट नहीं किया? What was the process that he came to know about it because God ने नहीं किया? That is empiricism. Empiricism को कुछ rationalism के methodology को use करके कहेंगे ये नहीं God ने नहीं किया. It's the people who are source of power. हमने इसको बनाया, हमारी मर्जी को किया. This is how through these processes you come to know about the reality of existence. कि बादशाह को गॉड ने नहीं बनाया, हमने बनाया. अगर हमने बनाया तो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे. then the revolution will be there. तो नेशनल का डिस्कोर्स क्या करेगा? लोगों के सोचने के अंदाज को change their thinking. It's one example. अब डिटेल तो हमने कर ली. Yeah, it's making sense. Yes, sir. All right. And then the point one, like पहली स्लाइड का पहला बुलेट पॉइंट का हम almost like हो गया उसको स्टार्ट करते हैं व्हाट इज दिस. न्यूटन्स लॉज ने क्या किया? न्यूटन्स लॉज ऑफ साइंस क्रिएटेड अ माइंडसेट. यूनिवर्स ह्यूज मशीन है रन बाय इमिटेबल लॉज, फिक्स्ड लॉज. टाइम आउट नेचुरल वर्ल्ड क्या है? फिक्स्ड मशीन है, उसके ऑब्जेक्टिव लॉज ट्रूथ्स हैं एंड यू कैन कम टू नो अबाउट दैट. दिस इज व्हाट न्यूटन इज आर्ग्यूइंग. व्हाट इज आउट देयर? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड? यूनिवर्स इज अ ह्यूज मशीन, उसके फिक्स टाइमिंग है. दिनों रात अपने टाइम पे ही सीजन चेंज होंगे, दिनों रात बदलेंगे. और ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशंस कैसे होंगी? माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रोस्कोप्स डीएनए आरएनए के बारे में कैसे पढ़ेंगे? दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू नो बायोलॉजी एंड देन द फिजिकल साइंसेस. यूनिवर्स क्या है? ह्यूज मशीन है, फिक्स टाइमिंग है. सीजन कैसे चेंज होगा? उसके natural law, physical truths हैं, natural truths हैं. How we got to know about that? By mutable laws that are rational and discoverable. Rational laws हैं. What is the existence of the outer world? Natural दुनिया की चीजें क्या है? The truth exists करती है. और हम उस truth को जान सकते हैं. कैसे जान सकते हैं? By following scientific methodology, by following empiricism and rationalism. So this is what has been written there. This is what we covered. हम जान सकते हैं कि यूनिवर्स नेचुरल वर्ल्ड एक फिक्स दुनिया है, उसके फिक्स कवानीन है, नेचुरल लॉज है. उन नेचुरल लॉज को साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के थ्रू, एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म के थ्रू उसकी हकीकत को जान सकते हैं और ट्रूथ एग्जिस्ट करता है. दैट इज द बिगिनिंग. एंड ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एक्टर्स. एंड इफ दे अप्लाई द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग दे कैन नो द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड. What is the truth of external world? By following scientific methodology and through methods of rationalism and empiricism.
we can come to know about the truth of natural world. This is what Newton is arguing. And then he will work in mathematics. Newton's laws, mathematical principles. उसमें demonstrate करेगा कि existence है, eternal है, immutable fixed laws है nature की, और हम उन कवानीन को जान सकते हैं without God's intervention. How we come to know the truth, how we come, the study of knowing, epistemology, the study of knowing, how we come to know about something, rationalism and empiricism. है दुनिया की जानने का, that is religion. But religion, मज़हब के through भी तो है. Revelations के through we come to know. The prophet came and the revelations came, तो वो भी इल्म का ज़रिया है ना. Revelations के through आप जो हकीकत के बारे में जानते हैं कि ये हकीकत है. That is intellectual. But science is for a few regard. ये वो कहते हैं rationalism and empiricism. ये scientific methods. कि जिनको हम senses के through prove कर सकें और rational processes उसको साबित कर सकें, उसको हम हकीकत मानते हैं. Belief system और revelations के through जो आते हैं वो उसको नहीं मानते. ये इंटरप्रिटेशन मसला है. इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया की हकीकत दुनिया की वही है जो वो जानते हैं. साइंस के थ्रू इन मेथड्स के थ्रू जो दुनिया की हकीकत हम जान सकते हैं ये methods. So we can come to know about the reality of something through empiricism and rationalism. God interventions in reading. This is what they are. And we can understand. अब हम सिर्फ natural world के बारे में नहीं जान सकते. We can know that how we are going to behave when we meet with our friends. That will be quite different the way we are sitting here. Actually, but आज हम अपने दोस्तों को मिलेंगे जैसे हम यहाँ इस तरह नहीं होगा. So in argument, the beginning was through Newton's publications, 1687. That was the beginning. English Enlightenment. English philosophers abide English Enlightenment, and then French philosophers are going ideas go further expanded. This point number 6. So having this established a universe है, वो natural world है, उसकी existence है, उसके अंदर natural laws हैं, उन natural laws को उसको जान सकते हैं, scientific methodology. That was the major theme of Enlightenment. कि major theme क्या है Enlightenment का कायनात है, natural world है, उसके natural laws हैं, उनका उसको जान सकते हैं, scientific methodology, empiricism, rationalism के through. And human beings are rationalized. और वो natural world है, उसके facts immutable. And we can know about the human nature aspect. There's a Hobbes saying that human beings are nasty, narcissists. So how he came to know about that, insan selfish and narcissistic? Through rationalism. Hobbes was a rationalist thinker. He used speculative reasoning, and through that, through reduction, he came to know about the reality of human nature. That is nasty, and selfish. And then they came up to इंसान के बारे में हम जान सकते हैं, इंसान कैसे लर्न करता है, इंसान के लिए किस तरह के सियासी इदारे बनाए जाए, रियासत किस तरह की और वो कैसे फंक्शन करे. We can come to know about these things as well, but we have to follow scientific methodology and verification rationalism. And human beings are capable of reasoning. So that is the thing. The foundation of knowledge is human being. And starting over, Ikra Bismillah, पढ़ अल्लाह के नाम से, then again observation, even in a religion it's observation, and through that we come to know about the reality of something. So human beings are capable of reasoning. I think therefore I am. So that is how they can. But sometimes they do deviate, but why they do deviate, then the person must over that. क्यों वो deviation करते हैं? तो अब what is out there? दुनिया की national physical world की हकीकत क्या है? हमने कहा physical world एक huge machine है, उसके fixed कवानीन है, हम fixed कवानीन को objective laws को जान सकते हैं. And the second step was कि अगर natural world science के अंदर mathematics के अंदर objective laws कुछ exist करते हैं, तो social sciences के अंदर भी वो exist कर सकते हैं. यानी हम इंसान की फितरत के बारे में भी जान सकते हैं, या फिर हम ये भी जान सकते हैं कि रियासत किस तरह की हो, जिससे कि सारे रियासत के ऑर्गन्स और इंसान रियासत इस तरह से आपस में मिलकर काम करेंगे दुनिया में खुशहाली हो, prosperity हो, development हो, truth हो, justice हो. National truths नहीं है, इंसानी human institutions के बारे में भी उनकी reality है, और वो भी हम जान सकते हैं, और उनको भी दिया जा सकता है. So this is how national science की methodology थी कि हम दुनिया की हकीकत को scientific methodology से जान सकते हैं. इस पूरी methodology को translate कर दिया गया, draft कर दिया गया in social sciences.
कि हम सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड की हकीकत नहीं है 2 + 2 = 4 मैथमेटिक्स में अगर लॉ है ऑब्जेक्टिव है ट्रूथ है तो हम फिर इंसान की हकीकत को भी जानेंगे हम ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह की रियासत बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है डेमोक्रेसी हो मोनार्की हो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो हम इसके कवानीन बना के देंगे पॉलिटिकल साइंस फॉरेन पॉलिसी में स्टेट कैसे बिहेव करे then they would come up with neoliberalism and liberalism. So this is what they were arguing. And then they have strong faith. Laws can be discovered. National world के national fixed laws हम जान सकते हैं. Social world के भी laws हैं उसको भी जान सकते हैं. But through scientific methodology, through observation and through empiricism, verification empiricism के process के through. So this is what we covered already. And then Immanuel Kant came, a Prussian philosopher, German philosopher. So Prussia, Germany मुल्क नहीं था. Prussia was a bigger German state. अगर उस मैप के अंदर देखें तो इसमें Prussia would be there. Poland के north में देखें Brandenburg in Prussia. Lithuania के साथ बाद में Prussia. So Prussia was a German state. But the body वो expand कर दिया. So Immanuel Kant, the pure reason इसका जो idea है pure reason का वो सब Empiricism हमारे माइंड में जाएगा माइंड बाइनरी स्ट्रिंग्स को बताएगा that is pure reason of Immanuel Kant. But again he was concerned with empiricism and rationalism. And then he wrote a pamphlet. What is enlightenment? What is enlightenment? These article become, and he argued that enlightenment was all about to think about oneself. कि हमें अपने बारे में, अपनी हकीकत के बारे में जो है वो enlightenment is actually we need to know who we are and we need to know our institutions. और जो existing knowledge है उनको we need to challenge. जैसे Christianity में earth flag. They challenge the existing knowledge. Political science divine right thing, they challenge that. No, they think it's not because of the God, but it's the people who made it. So enlightenment ने क्या किया existing knowledge को challenge किया, refute किया, and then कि हमें अपने बारे में we need to know about ourselves, about our political institutions, about economic institutions, and all that stuff. So this is what was encouraged during Enlightenment era. अब ये जो ख्यालात थे philosophers, thinkers के दरमियान ये आपस में exchange हुए, networking हुई, और networking में ख्यालात would spread more rapidly, and then eventually it would bring a change in European society, particularly fast in France, and then later on in other parts of the world as well. And again, using scientific methods to discover new things, about the physical world, applying rational inquiry towards improving human life and the organization of human study, hopefully that will make sense to what they are saying. This is what they are discussing, so we covered all these points. So as we can see that enlightenment is applying rational thought to almost every aspect of human experience, not just science, but philosophy, morality, and society. So यही सारी चीजें हम पहले से discussing these points. So thinkers, enlightenment thinkers embraced the idea, scientific progress limits, universal, we have progress, the linear progress possibility, and all human beings are equal. It's equality of human beings, and then it's rationality of human beings. इंसान हम सब इंसान बराबर हैं, हर हम अकल रखते हैं. So equality of human beings was another major concept of enlightenment. All men are born free and equal, and then they think, and then they're supposed to find their leaders. So equality, सब इंसान बराबर है, but they can think, and then they would come up with claim कि हम किस तरह से रियासत को चलाया जाए, किस तरह से हम उसके कानून के बारे में बात करते हैं. So this is what we covered already. So then we got critique of the religious order. Religious order, the concept of order is there. Its tools, institutions, to make it very simple, अभी इसको हम बहुत बेहतर develop करेंगे आगे चलके. Order is rules and regulations and practices and institutions. उसको हम order करेंगे. एक order है चीजें तरतीब में बड़ी want sequence order होना चाहिए. जैसे state है, state एक political entity है रियासत, उसमें एक order है. हुकूमत हमसे ज़्यादा privileged है. Order है घर के अंदर भी father ज़्यादा privileged होते हैं. एक order वो order भी society के दिल में बनाते हैं. Order, rules and regulations and practices.
and institutions open. Enlightenment era में क्या किया गया? The beginning point was all human beings are equal, equality of human beings, and then they are rationalized. And if they apply, if they use their thinking, they can come to know about the existence of the outer world and the inner world through following scientific methodology, empiricism, and rationalism. This is point number one. ये एक point हमने कर दिया. More second. And second, then they challenge the institutions of that time. मज़हबी इदारे हो, practices हो, rules हो, they would challenge that. Enlightenment era है. So critique of a religious order. मज़हबी जो उस वक्त के practices थी, जो traditions थे, जो इदारे थे, उनको इन्होंने challenge किया. Enlightenment thinkers. And they tried and thrust towards it during Enlightenment. And they came up. इंसान human are capable of discovering word. The God intervention, that is secularism. कि हम जान सकते हैं दुनिया की हकीकत को by following empiricism and rationalism. And then they reduced, they undermined the traditional practices of that time. Indulgence in practice हुआ करती थी Catholic Christianity के. And I'll be sharing various documentaries जो मैं कुछ चीजें quote कर रहा हूँ. तो इसके बारे में भी I'll be sharing the documentaries. Data आपके पास इतना होगा कि आप से manage नहीं किया जाएगा. So the data would be there. Christianity के अंदर practice थी indulgence. Indulgence was that practice कि आप चर्च जाएंगे, अपने crime को confess करेंगे, गलती हो गई, जुर्म हो गया, ज़िना हो गया, and then you would pay your religious period the compensations. आप उनको monetary कुछ पैसे से देंगे, और वो फिर church कि जो लीडर होंगे वो आपके बिहाफ पे अल्लाह से दुआ करेगा ताकि आपको आपकी गुनाह से माफी मिल जाए, आपको निजात मिल जाए, आप सल्वेशन सीख कर ले और जन्नत के आला मकामात में आपको दर्जा मिल जाए. तो आपके बिहाफ पे हम भी तो जब यहाँ करते हैं तो दुआ जब मौलवी साहब को बुलाते हैं तो उनको कुछ देते हैं, उनको दुआ करते हैं कि हमारे गुनाहों की माफी. सिमिलर थिंग बोलते हैं ऐसे ही था. So same thing है सब एक ही तरह के रिलीजन से. But the point was you have to pay. And then जितना ज़्यादा पे करेंगे उतने ही जन्नत के आला मकामात में चले जाएंगे. Enlightenment thinkers challenged that. कि नहीं ये indulgence वाली practice ठीक नहीं है. Indulgence की practice को Enlightenment thinkers challenge करेंगे. ये practice जरूरी है. They would challenge that practice. And they would challenge क्योंकि Holy Roman Empire का political figure was the church. The church सिर्फ मजहबी इदारा नहीं था, वो सेंटर ऑफ नॉलेज भी था, लर्निंग यूनिवर्सिटीज भी यही तरह वही टीम दे रही थी, पॉलिटिकली भी पावरफुल थे, बल्कि उनके अपने मर्सनरीज भी थे, उनकी अफवाज भी हुआ करती थी जो उनके बिहाफ में लड़ा करती थी, और ढेर सारे मुल्कों के हुक्मरानों से मजबूत हुआ करता था चर्च का हेड. कुछ चैलेंज दोस प्रैक्टिसेस जो उनका सियासत में इंटरवेंशन करना, इंटेलिजेंस की प्रैक्टिसेस को Enlightenment era में क्या किया गया? They challenged the traditional practices of that time period, the order of that time period, the rules and traditions of that time period. They rejected superstition, and ढेर सारी church की practices को decry किया, condemn किया, and not only the thrust essence of Enlightenment was and declared the ability more of the church. Take it up. Miracles पे believe करते हैं, Christianity के miracles पे believe करते हैं. तो अगर आप miracles पे believe करते हैं तो ये बहुत बड़ा miracle है कि आप उनपे believe करते हैं जो Christianity के अंदर miracles है. So it's another bigger miracle. So they would like it's not कि मज़हब रियासत अलग-अलग हो, it's like they would make fun of the church. Ridicule करेंगे, humiliate करेंगे, ridicule उसको किया जाएगा. जो कि हमारे part of the world में नहीं हुआ. West में ये thinkers would ridicule these practices and make fun of the church. And among them was David Hume, the major Scottish Enlightenment thinker. So he would challenge the religious practices of that time. मैं उस पर कहूँ नमाज की कब हम होगी जमात में लगी पैसे समाज हम 4-10 जमात से पहले आएंगे. David Hume, David Hume, Scottish philosopher, and he challenged organized religions and Christianity या जो भी religions उसको challenge किया David Hume ने. It's full of superstitions, smacked those religions, superstitions. Any religion based on miracles was automatically invalid.
फिर आप मेडिकल्स पे बिलीव करते हैं, उससे बड़ा होता है कैस्टिंग पे बिलीव करते हैं। And then he came up with this concept of a god. कि इंसान ने जो concept of God create किया, that was basically initially इंसान जब दुनिया में आया तो it was very complex, huge word, उसको समझ नहीं आ रही थी। So because of the ignorance and because of the bewildered word universe, उसको समझने के लिए उसने God के concept को तब्दील किया and through which वो अपने आप के अपने acts को practices को justify करेगा। इस साल प्रसी इस point के ऊपर आई, the Greek mythologies which gods के अंदर से है, these points are from there। किस तरह early human history के अंदर इंसान ने concept of God erect किया, and then what were the reasons behind that? So they were Hume who challenged that idea के बस, and then ordinary लोगों को उसने कहा content से देखा कि इंसान को बुनियादी हकूक़ जो है fundamental rights हैं, was not favor इंसान को fundamental rights को ज़्यादा दिए जाए। उसने कहा कि जो ordinary लोग हैं वो superstition को जल्दी मान जाएंगे, वो ignorant हैं, superstition को मान जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा human rights, individual human rights के वो हक में नहीं उनको दिया जाए, चमके नहीं करेगा individual rights, political expression, right of association वगैरह, and that was Hume. And then third time again, ये भी basically sense में he would condemn the religious practices of that time period. यूरोप के अंदर particularly border, यूरोप के अंदर जो फ्रांस के अंदर जो injustice था उसको challenge करेगा कि ये क्यों है, और decline करेगा, condemn करेगा। फ्रांस के अंदर जो unjust punishment दी जा रही है, पूरी 15 से बातचीत करेगा तो कुछ लोगों की जो है tendencies हैं जो उनको सजा दी गई, जिसको transfer करवाएगा, खत्म करवाएगा, माफी दिलवाएगा। And he was also advocated reason injustice, rationality and empiricism, so he was in favor of that. Instead, human nature के बारे में skeptical रहती थी। ठीक है इंसान या argued कि इंसान अगर लगता है, लेकिन वो human being का rational लगता है, लेकिन उसको use करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर there was question mark। अकल तो हम रखते हैं, लेकिन अकल रखने के बावजूद हमारे मुल्क के जो सियासी हालात है उसमें हमें नजर नहीं आता कि हम अकल रखते हैं, क्योंकि हम जिन लोगों को लेके आ रहे हैं मार पर उससे प्लीज आ रहे हैं, हम अकल नहीं रखते। So this is how, तो ये भी वही कह रहे हैं कि what is happening there in our part of society. So skepticism about these things, about human beings, Christianity को भी you condemn this thing, the Christian school, our institution, and means that if even God अगर exist नहीं भी करता तो we need to create that. हमें text create करना चाहिए, क्योंकि concept of a God, religion के through scriptures के through आप इंसान को सुधार सकते हैं। तो एक morality religion create करते हैं, तो अगर God नहीं भी exist करता है या मज़हब नहीं भी exist करता, तो we need to create those things, ताकि moral scripture हो जिसके through of common individuals को, ordinary human beings को सुधारा जा सके, माशरे में social solidarity की जा सके। So he was arguing, उसने कहा अगर ये नहीं होगा तो barbarism and violence would be there। And I disagree with what you say, I defend that's right to say, that he was a champion of that. Freedom of expression was in world rights thinking. That the privileges centrality of man, human beings were, the individual was essence, was the major point of the argument. Insan barabar, individual human beings are, all human beings are equal, equality of human beings and rationality of human beings. Emphasis enlightenment falsafe का फर्क पे होगा, फर्क के बुनियादी हकूक़ के ऊपर होगा। That is how people privilege करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे इंसान के ऊपर। Alexander Pope ने कहा कि presume not God to scan the proper study of mankind is a man, and then the cult of individual rights की बात करें। Caesar became a Italian philosopher, they believe on crimes and punishment. The death sentence, the torturing moral and efficacious, and the concept behind was कि बुनियादी हकूक़ है इंसान के rights, life, liberty and property. These are the fundamental rights. ये state के बनने से पहले ही इंसान के पास rights. State as a political entity जब बनाया गया, इंसान ने दुनिया में आया तो रियासत नहीं थी, democracy या military dictatorships हो या communist system ऐसा तो कुछ नहीं है। जब इंसान ने there was any concept of a state, एक political entity इंसान नहीं बन सकता। तो जॉन लॉक ही कहते हैं कि रियासत के
बनने से पहले ही इंसान के पास एक बुनियादी रूल लाइफ लिमिटिंग प्रॉपर्टी जिंदगी गॉड ने दी and he's a free and he's equal so liberty and property tells us later on the property कैसे उसके पास state of nature में थी ये रियासत के बनने से पहले ही इंसान के पास जो राइट था acquire करने का acquisition का वो कैसे आ गया that guy is later on so life and liberty गॉड इंसान की जिंदगी तो जो गॉड इंसान की जिंदगी थी तो किसी दूसरे शख्स का ये राइट नहीं बनता कि वो गॉड के मैकेनिज्म्स के अंदर मुदाखलत करे इसलिए इंसान की जिंदगी आप नहीं जी सकते और फिर इंसान को सुधारा जा सकता है For that reason, they would come up that criminal justice system के अंदर रिफॉर्म्स की जाएंगी कि डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाती अगर आप इंसान को फांसी की सजा दे रहे हैं तो गॉड के मैकेनिज्म वर्किंग के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं that is in the Western Europe modern times in the capital punishment ban करता है कि नहीं होना चाहिए because the relief on criminal reform system के just ऐसा इंसान को सुधारा जा सकता है और फिर आप गॉड की वर्किंग के अंदर मुदाखलत करें and then the purpose of law-making policies would be achieving maximum happiness for the maximum number of people. Utilitarianism can be a bad thing. ये मकसद होना चाहिए state of policies when I law-making करें. So that was the 2 points that we covered up. Now 4 points. Number 1, the पहला point है all human beings are equal. Human beings are rational actors, and they can come to know about the reality of natural world and the social world through process of empiricism. And rationalism and evolving scientific methodology, they can come to know about the truths of natural world as well as social world. So they have to use the reality of reason and through the sense experience they can come to know about reality. And second point, Enlightenment philosophers, they condemn or they critique the rules and the practices of the traditional Christian order of that time. मजहब को चैलेंज किया और ये कहा कि अगर किसी दुनिया की हकीकत को जान सकते नेशनल दुनिया की भी सोशल फर्स्ट these are the 2 points that we covered. So then after the break I'll move forward towards the economic and political aspects. So then when the 10 minute period वो ये लेंथ है थोड़ा सा इसको So 15 minutes 15 से ज़्यादा नहीं बात करना बल्कि मैं कैसे ले 15 minutes after 15 minutes I start 15 minutes का 15 minutes इतना टाइम नहीं